Assalamu alaikum students. Today we are studying from accounting terminology. Accounting terminology means a meaning, right? कि accounts में words के meaning क्या होते हैं. So first start from capital. Capital means owner's own investment. If I am a business owner, so I invest my own money in the business, right? I invest my own money to start the business. So my own money invested in my own business called capital. Next, drawing. Drawing means withdraw for personal use. An amount which is withdraw by the owner for his personal use called drawing. For example, paid house rent, paid admission fees. It's called a drawings. Next, debtors. Debtors means the person whom we sell the goods on credit. ऐसा आदमी, ऐसा आउटसाइडर या हमारा कस्टमर जिसको हम गुड्स उधारी में बेचते हैं. मीन्स हमको ऑन द स्पॉट कैश नहीं मिलता है, हमें कैश फ्यूचर बेसिस में मिलता है, राइट? इसको हम बोलते हैं डेटर्स. द पर्सन whom we sell the goods on credit called debtors. Next, creditors. What is the meaning of creditors? A person whom we purchase the goods on credit called creditor. ऐसा आदमी जिससे हम गुड्स उधारी में खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स. नेक्स्ट, assets. Assets means owner's own property. Our own property called assets. For example, our own land and building, furniture and fixtures, machinery called assets. In short, our own property, हमारी खुद की property, it's called our assets. Next one, liabilities. Liabilities means our borrowings, borrows from the outsider. It's called liabilities. In other words or easiest word we can say हमारी उधारी. Means हमने आउटसाइडर से कितनी उधारी लिए है, राइट? इसको हम बोलते हैं liabilities. Next, bad debts. Bad debts means unrecovered amount. For example, an outsider or our customer has paid to 9,000 rupees to us, right? But he failed to pay us. उसने हमें पे नहीं किया, so हमारे 9,000 रुपीज़ क्या हो गए? डूब गए, हमारे वो लॉस है. This types of loss called bad debts. Next, transactions. Transactions means buying and selling of goods and services called transactions. कुछ भी चीज़ खरीदना या बेचना, राइट? आइदर गुड्स और आइदर सर्विसेज, इट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग. आइदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आइदर आउटस्टैंडिंग इनकम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? एक्सपेंसेस और इनकम डन बट नॉट टू बी रिसीव्ड आइदर पेड. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस हुए लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए. फॉर एग्जांपल, हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ ने काम किए बट हमने सैलरी अभी तक उनको नहीं दिए. इट्स कॉल एन आउटस्टैंडिंग सैलरी. मतलब हमें आज नहीं तो कल उनकी सैलरी उन्हें देनी है. सेम एज हमें कमीशन मिला, हमने कोई काम किया, हमें कमीशन मिला बट अभी तक क्या हमें रिसीव्ड नहीं हुआ, राइट? वो हमें मिलने वाला है. इट्स कॉल आउटस्टैंडिंग इनकम. Next, prepaid. Prepaid income, either expenses, means paid in advance or received in advance. For example, our prepaid mobile bill, our SIM bill, our SIM card. हमारे पास सबका SIM card है, हम क्या बोलते हैं? SIM card for लाइफ टाइम. और we don't know कि हम कितना ज़िंदा रहेंगे, हमारी लाइफ कितनी है, right? But we pay the money, pay the amount in advance. It's called prepaid. Prepaid means paying the money or paying the expenses in advance for receive the benefit on
future basis called prepaid expenses. Same as in prepaid income means income received in advance. Means we are dealing in some goods और हमको पता है हमें कमीशन मिलने वाला है, बट अभी तक डीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है और हमने पहले ही कमीशन ले ली है, राइट. मीन्स इनकम प्रोसेस में है बट वी रिसीव्ड फर्स्ट. हमने इनकम होने से पहले ही इनकम ले लिए. इट्स कॉल्ड प्रीपेड इनकम. नेक्स्ट, गुड्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं गुड्स मतलब अच्छा, जैसा हमें रिमार्क मिलता है गुड. इट्स गुड्स, GOODS. गुड्स मीन्स प्रोडक्ट, आइटम्स, राइट. एंड लास्ट वन इज गुडविल. Goodwill means a reputation of company. In other word or in easiest word we can say a brand. अभी हम सबको पता है brand just like Hyundai, BMW, Mercedes, right? These all are brands. But brands in accounting terminology we call a goodwill. Goodwill means our reputation in the market. हमारी कंपनी का मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है उसको बोलते हैं हम गुडविल. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी विच विल यूज्ड इन अकाउंटिंग क्वेश्चंस. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये सारे टर्मिनोलॉजीज ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में आएंगी. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Accounting standards, in short we call AS. Accounting standards providing the framework and norms to be followed in accounting so that the financial statement of different enterprises become comparable. It is necessary to standardize the accounting principle to ensure consistency, comparability, adequacy and reliability of financial reporting. Okay, why accounting statement has been used? इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, adequacy and reliability. As per the Professor Kohler, accounting standards are codes of conduct imposed by customs law or professional bodies for the benefits of public accounts and accountants generally. Thus, accounting standards are written policy document issued by the expert accounting body or by the government or other regulatory body covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statement. Now what is the needs of accounting standards? Accounting standard की needs क्या है? To promote better understanding of financial statement. Better understanding of financial statement means किसी को भी ये easily समझ में आना चाहिए कि accounts क्या बता रहा है, क्या reflect कर रहा है. Next, to help accountant to follow uniform procedure and practice. Means what? Uniform procedure means every accountant should practice on a equal basis, right? चाहे कोई एक enterprises का अकाउंट हो, फॉर एग्जांपल ए कंपनी का अकाउंट हो या बी कंपनी का अकाउंट हो, कोई भी कंपनी का अकाउंट्स हो, अकाउंटेंट जो है वो एक यूनिफॉर्म बेसिस पे, एक इक्वल बेसिस पे, राइट, एक इक्वल गाइडलाइन पे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट, to facilitate meaningful comparison of financial statement of two or more entries, to enhance reliability of financial statement and to meet the legal requirement effectively. Now see the accounting standards in India. In India, standard of accounting issued by the ICAI. Now what is ICAI? ICAI stands for
Institute of Chartered Account of India. The Council of the Institute of Chartered Account of India constituted Accounting Standard Board ASB on 21st April 1977. What constituted ASB? ASB stands for Accounting Standard Board, constituted by ACAI on 21st April 1977, recognizing the needs for accounting standards in India. ASB formulates accounting standards so that such standards may be established by the Council of an institute in India. The ASB will consider the applicable law, custom, usage, business environment, and the international accounting standards while framing the accounting standards in India. Due to globalization, the accounts prepared in India must be compatible with accounts prepared in other countries. This is the result in the existing ASB coverage with the IFRS. IFRS called International Financial Reporting Standards. The converge has resulted in what is known as Indian Accounting Standard. Indian accounting standards are basically the international accounting standard which have been modified in accordance with Indian accounting practice, customs and tradition. Usually in India there are 32 accounting standards, which 3 of are omitted, but for the purpose of 11th and 12th we are seeing only 10 accounting standards, right? Listen students, actually there are 32 standards, बट अभी हमें 11 और 12 जो हमारा बेसिक है तो कंप्लीट 32 स्टैंडर्ड्स हमें नहीं देखने हैं. सो हम क्या देखेंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें 11th और 12th में यूज़फुल है, राइट, बस हम वही देखेंगे जो टोटल होते हैं 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Number 1, AS1 Accounting Standard 1 stands for Disclosure of Accounting Policies. 1st April 1991 for companies and 1st April 1993 for others. According to this standard, the accounting policies followed in the preparation and presentation of financial statement should be form a part of financial statement and normally be disclosed in a one place. Clear? So first accounting standard, it stands for disclosure of a accounting policy. AS2 stands for valuation of inventories, verified on 1st April 1999. According to these standards, inventories in general should be valued at lower of a historical cost and a net realizable cost. Historical cost means जिस cost में हमने assets खरीदे हैं, and realizable cost means जिस cost में हमने assets बेचे हैं और अभी current की cost क्या है. Now AS3 stands for cash flow statement, verified on 1st April 2001. According to these standards, a cash flow statement is prepared and presented for the period for which the profit and loss account is prepared. Clear? कैश फ्लो कब बनता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है, वही पीरियड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है टू प्रेजेंट द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, आफ्टर AS3 there is AS6 stands for depreciation accounting. Depreciation means reduction in the value of fixed assets. हमारा जो भी फिक्स्ड असेट है उसकी वैल्यू रिड्यूस होना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई परचेज अ बाइक,
मैंने एक न्यू ब्रांड बाइक परचेज की एंड द बाइक कॉस्ट रुपीज 60,000. आफ्टर 1 year, if I am going to sell the bike, should I receive 60,000? No, I received either 45,000 or 50,000. So deducted value called depreciation. Means जो भी वैल्यू कम हुई अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू, जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसको छोड़ के जो भी वैल्यू हमें रिसीव्ड हुई है, जो बीच का गैप होता है, इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन AS6 स्टैंड फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, वेरीफाइड ऑन 1st April 1995. According to these standards, the depreciation amount of an assets should be allocated on a systematic basis for each accounting period during the useful life of an assets. Means what? कि जो भी हमने assets को यूज किए हैं, कितने साल यूज किए, उसके लाइफ के बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई परचेज अ बाइक ऑन 2018, मैंने 2018 में एक बाइक परचेज किया था 60,000 की. आज 2020 में बाइक में बेच रहा हूँ, तो क्या मुझे 60,000 रुपीज़ पूरे आएंगे? नहीं, मुझे आइदर 40 आएंगे, आइदर 45 आएंगे. तो जो बीच का डिफरेंस है इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, मीन्स आर यूसेज वैल्यू. नेक्स्ट AS8 stands for Accounting for Research and Development, verified on 1st April 1991 for companies and 1st April 1993 for others. According to these standards, the amount of research and development cost should be charged as per expenses of the period in which they are actually incurred. Clear? Next AS9, and AS9 stands for Revenue Recognition, verified on 1st April 1991 for companies and 1st April 1993 for others. These standards deal with the basic required for recognition of a revenue item in the profit and loss account for an enterprise. It lays down condition to recognize revenue that arise from the various transactions of an enterprise. रेवेन्यू रिकग्निशन मीन्स, इन अदर वर्ड और ईजिएस्ट वर्ड वी कैन से, हमें इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हुई है, मीन्स हमें इनकम कहाँ कहाँ से रिसीव हुई है, उसके बारे में डिटेल्स लिखना. वाई? टू ईजीली प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस. क्लियर? नेक्स्ट AS10, एंड AS10 स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स, verified on 1st April 1991 for companies and 1st April 1993 for others. According to these standards, the cost of fixed assets should comprise of the original cost and any attribute cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The fixed asset should be eliminated from the financial statement on disposal or when no further benefit is expected from their use. What the accounting standard says in easiest word, to comprise of the original cost of any attribute cost. Means हमने जो फिक्स एसेट लाए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, उसकी एट्रीब्यूट कॉस्ट क्या है. फॉर एग्जांपल, हमने एक मशीन लाए 1 लाख रुपीज़ की और इसका इंस्टॉलेशन हमें लगा 30,000. सो उस मशीन की एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई? 1,30,000. राइट? सो इसका पूरा एक्चुअल कॉस्टिंग करना कि एक फिक्स असेट्स की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है और आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इसकी लाइफ कितनी होगी, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना. नेक्स्ट AS12. AS12 स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, verified on 1st April 1994. According to this standard, government grant should be recognized when there is an assurance that the enterprise will comply with the condition attached to them. Next AS13, and AS13 stands for Accounting for Investment, verified on 1st April 1995. According to these standards, an enterprise should disclose the current and long-term investment distinction in its financial statement. Current investment should be carried in the financial statement at a lower cost or a fair value.
व्हाट इट मीन्स कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं आइदर शॉर्ट टर्म आइदर लॉन्ग टर्म, सारे इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना, बताना. एंड लास्ट 10 AS22, and AS22 stands for accounting for tax on income or accounting for taxes on income verified on 1st April 2001. According to these standards, tax expenses for the period comprising current tax and deferred tax should be included in the determination of net profit or loss for the period. What this AS said, जो भी हमें टैक्स लगा है, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स मीन्स करंट ईयर का टैक्स और कुछ हमारा टैक्स पेंडिंग है, वो किस पे, हमारे प्रॉफिट और लॉस पे, उसको क्लेरिफाई करना. क्लियर स्टूडेंट्स? सो देर आर 10 AS which we will learn in the whole year, right? So AS1 stands for disclosure of accounting policies, AS2 stands for value of inventories, AS3 stands for cash flow statement, then AS6 stands for depreciation accounting, AS8 stands for accounting for research and development, AS9 stands for revenue recognition, AS10 stands for accounting for fixed assets, AS12 stands for accounting for government grants, AS13 stands for accounting for investment, and last AS22 stands for accounting for taxes on income. Clear students? यहाँ पे आपका chapter number 1 is completed. Inshallah from next lecture we are going to start our chapter number 2. Thank you. Assalamu alaikum.